Hello and welcome back to another video about update for freshers, especially in IGDTUW. So this video is going to have the new update for the orientation program, which I had not shared in my last video. Point number 2, it would be having information about all the forms we need to fill for hostel, and it will also include the hostel fee structure. So before we start with the video, let's first discuss about the hype being created by IGDTUW on Twitter as well as on LinkedIn. And the reason behind this hype being created is because of the convocation ceremony which we had recently, where many of the other colleges and many people got to know as to where our seniors, basically the batch of the batch which passed in 2021 got placed. So our seniors have been placed in almost every company you can name, and the package has gone up to 45 lakhs per annum. So if you have a seat in IGDTUW, don't give it a second thought, just grab it and let's meet. So these are some of the LinkedIn posts or the tweets. Let's have a look at them. Okay, so let's start with the first tweet. That is, my wish for 2022 is to date someone from IGDTUW. The reason being this tweet: how to achieve financial independence, marry someone from IGDTUW. But हम सबसे शादी करने होता है ना जैसे. Moving on to the next one. If you throw a plane in IGDTUW, 95% chances it will land on SD, LinkedIn, SWE, Microsoft, GitHub, Google, etc. This tweet is inaccurate. It's actually 100%. Superb. That's good. That's a good one. Probably we can build our next hiring hub after IGDTUW. ऐसा नहीं यार, हम बहुत मेहनत करते हैं. There are two types of man: sucklonde and recruiters of visit IGDTUW. Please. And पिछले वाले के कड़क जवाब के लिए ये वाला: I am really disappointed to see comments about girls of IGDTUW. Seriously, have we gone to such low standard for some memes and self-validation? As an interviewer, I can say that students of IGDTUW are really hardworking and knowledgeable. Most of the second years are even more skilled than an average graduate of other colleges. अब नहीं आना क्या IGDTU? Just accept it, guys. They are doing hard work and getting results out of it. So instead of criticizing, try to do something for your own. Okay, तो अब उस पर चलते हैं जिसके लिए एक्चुअली वीडियो बनी थी. Let's start with it. Okay, so let's start. First of all, जो पिछली बार मैंने ओरिएंटेशन के बारे में नहीं बताया था, that was the location for the orientation. Orientation is on 3rd of January, right? Yeah. So जो information दूसरी है, that is the following. स्क्रीन पे अभी दिख रही होगी. इन्फॉर्मेशन है वो है ये वाली कि दैट द ओरिएंटेशन इज़ ऑन 3rd of January 10 AM ऑनवर्ड्स, एंड लोकेशन है शाह ऑडिटोरियम. या आप नॉर्मल हमारी IGD की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा. Then moving on to the notice about hostel. Okay, so as you can see, this is the notice for the new admission students as per academic calendar for new students. Okay, so ये fee structure है, exactly आपको दिख रहा होगा. Should I read it out? Okay, so hostel admission fees 600 है, ये non refundable होती है, एक बार देनी होती है, and you won't get it back. Hostel charges हैं ये Jan to July के लिए. It is 22,400. हॉस्टल सिक्योरिटी फीस ये आपको मिलती है अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई डैमेज क्रिएट करा तो ये नहीं मिलती है, वरना व्हेन यू लीव द हॉस्टल, दैट इज़ ऑब्वियसली आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री, सो यू गेट दिस 10,000 अमाउंट बैक. हॉस्टल वेलफेयर चार्ज होता है, ये आपको हर टाइम देना होता है, सॉरी एक ही बार देना होता है. दिस इज़ 6,000 एंड टोटल चार्जेस जो ऊपर हैं दैट इज़ 39,000. ओके, सो ये सिर्फ हॉस्टल वाला है. हॉस्टल मेस का अलग है. हॉस्टल मेस मेंटेनेंस 600. Hostel mess charges for 8 months is 24,800. And for example, if you haven't had food on some days and it's in the record, you have to write it in a particular register when you do not take a meal for a day. If you do not take meal for a complete day, only then you get that amount back. ऐसा नहीं कि लंच नहीं खाया मैंने, डिनर नहीं खाया, पैसे उसके वापस दो, नहीं. ठीक है, तो मेस फीस टोटल है 25,400. इस बार चार्जेस थोड़े बड़े हैं, बट कोई नहीं, महंगाई बढ़ गई तो. एंड अकाउंट डिटेल्स नीचे हैं. You do not have to pay the fees until and unless your name comes in the list. Okay, and I believe the list will start coming on 1st of Jan. Yes, before 4th of January, I believe 1 to 2 lists would be out.
सो यस, जब तक सीट ना मिले तब तक कि पैसा नहीं भरिएगा, क्योंकि पैसा भरने से आपको कमरा नहीं मिलेगा. गॉट दैट? यस. अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस एंड फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स. एंड ये मैं दूसरा उनके लिए भी दिखा देती हूँ, जो क्या बोलते हैं हमारे रीएडमिशन स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी आया है फ़ीस स्ट्रक्चर. हमारा रीएडमिशन स्टूडेंट्स इन द सेंस जो भी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर्स है, बाकी सारा फ़ीस स्ट्रक्चर सेम है. बस हमारे मेस चार्जेस जो पिछली बार वाले हैं वो कैरी फॉरवर्ड हैं, क्योंकि हमने खाना नहीं खाया था एक भी बार. एंड येस, लास्ट डेट देने का है 3 जनवरी 2022 एंड हमें स्लिप भी सबमिट करनी है. सो दैट्स ऑल फॉर द रीएडमिशन स्टूडेंट्स. एंड नाउ आप लोगों को फॉर्म क्या देने हैं फॉर एप्लीकेशन ऑफ द हॉस्टल. सो आप ऑनलाइन जाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ. हाँ जी, ठीक है, आप हमारी साइट पर गए एंड देन यू गो ऑन टू एडमिशन्स. इसके अंदर हॉस्टल एडमिशन्स, ठीक है. देन यू ओपन अप टू दीज नोटिस. नोटिस में आप नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा, नोटिस में आप नीचे जाएंगे तो यू विल फाइंड हॉस्टल एडमिशन फॉर्म डेटेड 2028/11. ओके, नो वरीज, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. पुराने वाला भी मुझे नया वाला क्योंकि अभी दिख नहीं रहा है इसके अंदर. ओपनिंग इट, यू नीड टू डाउनलोड दिस. पूरे को आप डाउनलोड करेंगे. लेट्स हैव अ फुल व्यू. सो ये है हॉस्टल एडमिशन फॉर्म. अपना नेम, ऑफिस एड्रेस, रेजिडेंस, पेज नंबर 2, गार्डियन दो, गार्डियन लोकल गार्डियन दिल्ली एनसीआर के हो तो फेवरेबल है. या नेक्स्ट, दिस इज द मेडिकल इन्फॉर्मेशन फॉर्म. दिस नीड्स टू बी फिल्ड एंड साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय अ डॉक्टर. Medical fitness certificate, same goes to the same for this too. You need to get it signed and stamped by a doctor. Certificate for availing admission against, no, this is only applicable if you are availing admission to hostel under the quota of physically handicapped. This is the affidavit by the student. Okay, so these two affidavit, one being affidavit by the student and affidavit by the parent. ये जो दोनों हैं इनके सिर्फ प्रिंट आउट नहीं निकालने हैं. आप कोर्ट में जाएंगे, कोई भी आसपास ही आपके लॉयर हैं उनके पास जाएंगे, 50 रुपये में स्टैम्प पेपर बन जाता है. वो प्रिंट करेंगे, एफिडेविट बाय स्टूडेंट, एफिडेविट बाय पेरेंट. उसमें आपका नाम लिखा जाएगा, नीचे साइन करा जाएगा. द एफिडेविट इज़ बाय पेरेंट, नीचे पेरेंट का साइन होगा, स्टूडेंट तो स्टूडेंट का साइन होगा. आप आ जाएंगे, उनको बोलेंगे आपका काम हो जाएगा. 50 रुपये से ज़्यादा मत दीजिएगा. मैंने 100 रुपये दिए थे क्योंकि मेरा वो मान नहीं रहा था. तो देखते हैं भगवान आपके साथ कितना फ़ायदा करता है, कितने पैसे बचते हैं. बाकी मुझे आके दे दीजिएगा क्योंकि मैंने आपको बताया थे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. दिस इज द अंडरटेकिंग फ्रॉम द स्टूडेंट एंड द गार्डियन. यू नीड टू साइन इट, फिल विथ योर नेम एंड यस, जस्ट साइन इट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. दिस इज द अंडरटेकिंग यू हैव टू गिव. अंडरटेकिंग कि आप कोई ख़राब चीज़ें नहीं करेंगे हॉस्टल में, एंटी सोशल एक्टिविटी यू नो, एंड कांच नहीं तोड़ेंगे, किसी की मारपीट नहीं करेंगे, किसी की रैगिंग नहीं करेंगे. इतना तो कॉमन सेंस है. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट एंड यस, दिस इज द लास्ट पेज ऑफ द अंडरटेकिंग विच वी हैव. बस इतना ही फॉर्म भरना है आपको. एंड विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो टू. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और प्लीज़ यार थोड़ी सब्सक्राइब करा दो थोड़ी जल्दी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप इट हेल्प्ड यू क्लियर अ लॉट ऑफ डाउट्स. एंड अभी भी अगर किसी के दिमाग में डाउट आ रहा है कि हमें IGDTUW लिखना चाहिए, नहीं, गो फॉर इट. प्राइवेट कॉलेज से बहुत बेहतर है, फ़ीस बहुत कम है और जॉब आपकी 100% यहाँ लग जाएगी. पर ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करें तो जॉब मिल जाएगी. थोड़ी तो पढ़ाई आपको भी करनी पड़ेगी. कोडिंग में चाहिए तो कोडिंग फर्स्ट ईयर से करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा. एंड विद दैट आई वुड लाइक टू एंड माई end this video, and do like, share and subscribe, and see you in the next one. Thank you. मेरे लैपटॉप को भी अभी अपडेट होना था. पूरा विंडोज़ 11 इसमें हुआ इंस्टॉल, तो ये बोल रहा है फिर से रीसेट करो पासवर्ड. और सारा मेरा लैपटॉप का इसमें मतलब पापा के पास होते हैं, तो कुछ भी मैं खुद लगा ही नहीं सकती इसमें. अभी होना था. अभी वीडियो जो 6 बजे आ जानी चाहिए थी वो अब 8 बजे आएगी क्योंकि पापा घर पर नहीं है. ओह गॉड, वही